Hello everyone. Today we are going to learn about what is inside our earth. So it is crucial now, right? We are leaves on the earth, but we actually don't know what is inside the earth, right? We leaves on the surface of the earth, right? On the exteriors of the earth, but we don't know what is actually inside the earth, right? We dig the earth. Many a times we dig the earth for the well and for the different purposes, but then also we are unable to know what is actually inside the earth because earth is circular, right? So we don't know actually what is inside the earth. So this is the Bhishmakwana. We are going to learn chapter 2nd of class 7th geography. Okay, you can see the beautiful structure of the earth, right? This is divided into the four parts, right? These four parts are named or labeled as in different with the different names. So in this chapter, first we are going to learn about these four parts. What are these four parts, right? This outer part, then this inner part, and both the innerst part of the earth. So let's begin with it. Stick towards us. Okay, so this is the labeling of the all the four parts. Most exterior part of the earth we called is at crust, right? This is the crust, this exterior part. You can see over here this part, only the thinnest part. This is the crust. Fine. Then this, the red part is known as mantle. Then this part is known as outer core, and this the yellow part will in the center is known as inner core. So this is the classification of all the four parts of the earth, right? This are, as we go inside, जैसे जैसे हम अंदर जाते जाएंगे, the things will going to change, right? तो सबसे outer part जहाँ पे हम रहते हैं, that is known as the crust of the earth. Means जिस जहाँ पे अभी आप बैठे हैं, जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ, जहाँ पे हम सब रह रहे हैं, ये क्या है? ये क्रस्ट है, अर्थ का सबसे एक्सटीरियर वाला पार्ट है. फाइन. अब ये क्रस्ट भी होती है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक तो वो क्रस्ट होती है जो लैंड है, जहाँ पे हम रहते हैं. एक क्रस्ट वो होती है जो सी के नीचे है, राइट? बिकॉज दोनों अलग अलग जगह है ना. हम लैंड पे रहते हैं और सी जो वाटर एनिमल्स रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? सी में रहते हैं. तो दैट्स वाई वो जो प्लेस होती है जो सी के अंदर होती है वो अलग क्रस्ट है, और जिस जो लैंड पोर्शन है ये अलग क्रस्ट है. मीन्स दिस ग्रीन एरिया इज द डिफरेंट क्रस्ट एंड दिस ब्लू एरिया हैव अ डिफरेंट क्रस्ट. मीन्स डिफरेंट है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ ऐसा है कि ये सी है और ये लैंड है इस वजह से डिफरेंस है. बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस है इनके अंदर. जो क्रस्ट ये लैंड का होता है दैट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर्स, राइट? ये जो क्रस्ट होता है ये 35 किलोमीटर्स का होता है, और जो क्रस्ट वाटर का होता है वो सिर्फ 5 किलोमीटर्स का होता है. मीन्स अगर आप इमेजिन कीजिए कि लैंड का क्रस्ट अगर इतना लंबा है, राइट? इतना अगर हम फॉर इंस्टेंस इमेजिनेशन 35 किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इतना मैं अभी दिखा नहीं सकता वीडियो में. तो 35 किलोमीटर्स अगर इतना है, हम इमेजिन करते हैं, तो वाटर का क्रस्ट सिर्फ इतना सा होगा. तो व्हाट इज दिस? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, इफ अगर 35 किलोमीटर्स में इतना लंबा हो रहा है तो वाटर का क्रस्ट सिर्फ इतना सा बड़ा है. तो ये कैसे हुआ? बिकॉज बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्रस्ट में क्या चेंजेस है. तो लेट्स बिगिन विद इट एंड स्टिक टूवर्ड्स. ओके, इंटीरियर ऑफ द अर्थ. द मोस्ट आउटर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज क्रस्ट. जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे आउटर लेयर का नाम क्या है? क्रस्ट, राइट? देन दिस is the thinnest of all the layers. We have four layers, right? The first is crust, then the mantle, then the outer core and the inner core. So the crust is सबसे thinnest, सबसे पतली जो है वो यही है crust, because ये 35 किलोमीटर्स तो कॉन्टिनेंट पे है. on the continental mass you can see over here it is 35 kilometers on the continental mass, right? and 5 kilometers on the ocean mass. मीन्स अगर आप यहाँ पे अगर आप अभी ज़मीन पे अगर आप होल करना स्टार्ट करेंगे तो टिल 35 किलोमीटर्स डाउन आपको अर्थ क्रस्ट मिलेगा. बट अगर आप ओशन में अगर होल करना स्टार्ट करते हैं तो टिल 5 किलोमीटर्स डाउन आपको अर्थ क्रस्ट मिलेगा. सो बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. फाइन. ओके, एंड ये तो हो गया हमारी सिर्फ लेंथ की बात. बट अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करें, मीन्स क्या मिनरल्स वहाँ पे कंपोजिट होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो कंपोजिशन भी दोनों का डिफरेंस है,
right? On the continental, it is known as Sila, सियाल मीन्स सियाल जो होता है वो दो का फुल फॉर्म है, यू कैन सी ओवर हियर। आप कॉन्टिनेंट पे हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं सियाल, एंड दैट इज मेड अप ऑफ SI मीन्स सिलिका एंड LA मीन्स एल्यूमिनियम। मीन्स सिलिका और एल्यूमिनियम दोनों का मिक्सचर बन वो है कॉन्टिनेंटल मास। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ओशन क्रस्ट, सो वी कॉल इट एज सीमा, राइट, एंड इट इज द कंपोजिशन ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। फाइन, सो अगर हम यहाँ देखते हैं तो दिस क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सियाल, राइट, अर्थ क्रस्ट is made up of, the land crust is made up of Cr, and this crust is made up of सीमा, right? So ये दो terminologies आपको याद होनी चाहिए, because this is going to come everywhere and you have to know about it. What is Cr and what is सीमा? Cr means silica plus aluminium and सीमा means silica plus magnesium. अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं, हम लैंड क्रस्ट की बात कर रहे हैं, देन वी कॉल इट एज सियाल, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओशन क्रस्ट, देन वी कॉल इट एज सीमा. So these are the further classifications about the crust, right? So crust दो पार्ट में होती है, एक लैंड और एक ओशन. लैंड वाली जो होती है वो 35 किलोमीटर्स की होती है, ओशन वाली 5 किलोमीटर्स की होती है. लैंड वाली जो होती है दैट वी कॉल इट एज सियाल, एंड द ओशन वन वी कॉल इट एज सीमा. फाइन, सो दिस वाज द स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट द Sial and Seema and about the earth crust. Now further moving ahead, we are going to learn now the what is mantle. Okay, so in this picture you saw this is the mantle, fine, and you saw this area as mantle. So this area is mantle. If ये कितना बड़ा होता है, this is composited of 2900 मीन्स 2900 किलोमीटर्स की लेंथ होती है, एक्सटेंडेड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर्स. ओके, मीन्स आप 35 किलोमीटर्स तो पहले आप नीचे गए, यहाँ तक क्रस्ट खत्म हुआ हमारा. अर्थ क्रस्ट खत्म होने के बाद आपको फिर काउंट करना है 2900 किलोमीटर्स, देन वहाँ से स्टार्ट होगा हमारा मेंटल. फाइन, वो मेंटल होता है. देन दिस इज मेंटल, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कोर, द कोर कंपोजिट्स ऑफ टू थिंग्स, आउटर एंड इनर. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कोर, तो कोर का जो रेडियस है, बिकॉज कोर क्या है, पूरा सर्कुलर पाथ है. यहाँ पे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था दिस कोर. व्हाट इज दिस? इट इज इन सर्कुलर. यू कैन सी दिस इनर कोर, दिस इज इन सर्कुलर, एंड दिस यू कैन सी दिस आउटर कोर. इफ अगर हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, राइट, एक सेमी सर्कल अगर हम यहाँ पे भी बना देते हैं ऐसा करके, और अगर हम इन दोनों पार्ट्स को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ सर्कुलर हो जाएगा. सो ये जो सर्कुलर है ये कितना है, इसका डायमीटर है, इसका जो रेडियस है दैट इज कंपोजिटेड ऑफ 3500 किलोमीटर्स. इसका जो डायमीटर कितना है, 3500 किलोमीटर्स का, एंड इट इज मेनली मेड अप ऑफ द निकल एंड आयरन. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज निफी. जब जैसे हमने देखा क्रस्ट दो होते हैं, फर्स्ट इज मेड अप ऑफ सीला एंड सेकेंड इज मेड अप ऑफ सीमा, राइट, सियाल एंड सीमा. Then if we are talking about the crust, the crust is made up of Nifi. Nifi means nickel and iron. Nickel and furious, that is iron. Fine, so that we call it Nifi. And the center of the core has high temperature and pressure. और जितना हम अंदर जाते जाएंगे, हम जितना अंदर जाते जाएंगे उतना ही वहाँ पे गर्मी बढ़ती जाएगी और उतना ही वहाँ पे प्रेशर बढ़ता जाएगा, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, तो उसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर राइज होता जाएगा और प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा. So this was the small description regarding our topic, that is the interiors of the earth. As we have started from here, so this area will be of 35 kilometers. Then if we went till here, then this area is of 2900, and when we are talking about this, so here the radius is 3500. Fine, so this is the interiors of the earth. We are talking about the core, mantle and inner core and the outer core. Fine, so this was the short and the beautiful description regarding the interiors of the earth. Now I think you are able to know about, or you are able to grab the knowledge, complete knowledge regarding अर्थ के अंदर है क्या, राइट. तो अगर कोई भी आपसे कभी भी पूछे कि अर्थ क्या है, तो बोल देना अर्थ 4 पार्ट्स में डिवाइड है. वो है क्रस्ट, मेंटल, आउटर एंड इनर कोर. आपको किलोमीटर्स भी मैंने बता दिए हैं, आपको
आपको मैंने कंपोजिशन भी बताई है, that if we are talking about the land area, then it is the Cr, silica and aluminium. If you are talking about the ocean area, then it is Sima, silica and magnesium, right? These terms are quite not familiar to you, might be you have ever read in the science or not, but you will be able to know about this in your upcoming classes. Okay, what is aluminium, what is magnesium, what is iron, what is everything, right? So you are going to learn about it. So that's all for today, and I hope you enjoyed the video. So I request you to please subscribe the video for getting the more updates, and the further slides will be uploaded in the next video. Thank you. Have a nice day.